An equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God. This quote is given by the Indian mathematical genius Sir Srinivas Ramanujan. To understand this quote, you need to understand the personality that Sir Ramanujan was. Good morning, one and all present here. Today, I, Komal Sood, on behalf of DC Model School, welcome you all to celebrate with us India's National Mathematics Day. December 22nd, the birth anniversary of India's famed mathematician Sir Ramanujan, is celebrated as National Mathematics Day. Sir Ramanujan was a religious Brahmin. He perceived God in every process happening around him. He saw patterns in his communication with God and used equations to get closer to God and his creations. Sir Ramanujan's talent and research left an indelible mark on mathematics. So, to commemorate this day, to motivate and inculcate a positive attitude towards learning mathematics, we dedicate today's EHV session to mathematics and the values we can learn from its topic. Let us start this session with this picture. Look at the picture and see how many questions you create in your mind. Among those questions, there must be some like what it shows, how many apples are there, what amount do you want to withdraw from this ATM machine, etc. Among these questions, how many are related to maths? I mean, how many denote the number? I know there are many. Let us know how many questions are related to maths in our day-to-day life. When do you get up? How old are you? Which class you are studying in? How many chapatis do you eat? At what time does the school bell ring? How many students are there in your class? Who secured first rank in the class? What is the time now? So you see, almost 60% or more of the questions asked to the students are related to maths. It is very hard to pass a single day without using the mathematical concepts such as counting, time, money, etc. Even less educated use maths in their day-to-day life. Therefore, maths touches everyone, every day, in all walks of life. So, we can proudly say, maths is omnipresent. सिर्फ ईश्वर ही नहीं जो सर्वव्यापी है. हाँ, maths is also omnipresent. अक्सर नई चीजें सीखने के लिए हम जानी मानी चीजों का रेफरेंस लेते हैं. ऐसा मानते हुए कि हम सभी को मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस और फॉर्मूलों की जानकारी है, हम कुछ ज्ञात विषयों के माध्यम से मॉडल वैल्यूज का परिचय देना चाहते हैं. फॉर दैट, लेट मी नाउ इनवाइट भावना मैम टू एक्सप्लेन अस द वैल्यूज दैट मैथमेटिकल ऑपरेशंस टीच अस. Greetings of the day to one and all. Mathematics is the mirror of civilization. Learning of mathematics results in the development of a number of fruitful values in the students, such as practical values, social values, cultural values, and recreational values. But before that, I want to elaborate what actually mathematics stands for. The real full form of mathematics. M, miracle of nature. A, art of arithmetic. T, tool of knowledge. H, habit of problem solving. E, evaluation of civilization. M, magic of numbers. A, application of rules. T, tool of knowledge. I,
ideas of intellect. C. Creativity of algebra. Last but not the least, S stands for science of learning. Now, let me throw some light on our basics, that is addition and subtraction. What is addition? It's plus, to put together. Subtraction stands for minus, means take away. My dear students, we all have some positive qualities as well as some negative tendencies. Nobody is perfect in this universe, but at least we can try. हम कोशिश तो कर सकते हैं. We all have two kinds of accounts with the Almighty, the Creator of universe. One is positive account and the other is negative account. Whenever we do something good, we get benefits. That is, God adds 1 point in our positive account and subtracts 1 point from our negative account. But whenever we get indulged in some bad deeds, we have to suffer double loss. Yes, children, we have to suffer double loss. That is -2 from the positive account and +2 in the negative account. So you see that our deeds are kept as an account of us in the hands of divine. It does not end here only. We can multiply our good deeds and increase our positives. Now, a question may arise in your mind. How can I multiply positivity or good deeds when I already have done something wrong unknowingly? क्या पता मुझसे कुछ गलती हो गई हो जाने अनजाने, मुझे पता भी ना चला. By simply following the magical principle, help ever, hurt never. सबकी मदद करो, दिल किसी का ना दुखाओ. Now comes the multiply, a smiling multiply. Let's start a helping chain. You help someone first and in return tell them to help someone else. आप किसी की मदद करो और उससे कहो वो आगे किसी और की मदद करे. And this way it will get multiplied. The help and support will reach to the maximum. If one person has love and peace in his heart and influence just one other, that will be double. हम सभी सोचते हैं कि हम एक व्यक्ति के रूप में एक प्रभाव नहीं बना सकते हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में हम स्वयं को बदलते हैं. One candle can light many lamps. जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. Every one of us has responsibility to put love and peace in our hearts and enlighten the world. Now comes the division. Division by 0. When we divide any number by 0, the answer is infinite. Now children, you must have a question in your mind. What is infinite happiness? That is number of desires fulfilled divided by the number of desires entertained. जो मैंने चाहा क्या मुझे मिला? मेरी ख्वाहिशें पूरी हुई? बिल्कुल हुई. जो मैंने चाहा मुझे मिला और जो मेरी ख्वाहिशें पूरी हुई उससे मुझे असीम खुशी की प्राप्ति हुई. So children, never stop sharing, caring and helping others because it makes our life more meaningful. हमारी जिंदगी को मायने मिलते हैं जब हम शेयर करते हैं, किसी की केयर करते हैं, because sharing is caring और हम किसी की मदद करते हैं. And when we achieve infinite happiness, हमें असीम खुशी की प्राप्ति कब होती है? What do we get? हमें क्या मिलता है खुश होकर? We attain peace, contentment, self-discipline. हमें शांति की प्राप्ति होती है, हमें संतोष मिलता है और हम आत्म अनुशासन में आते हैं. Dear all, in the end, I would like to say we have to respect 3 things. Old age, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी. लॉ,
हमारी सोसाइटी का लॉ, अवर कल्चर, हमारी भारतीय संस्कृति. We have to control 3 things: tongue, temper, temptation, हमारी जीवा, हमारा स्वभाव, हमारी इच्छाएं. We have to watch 3 things: speech, behavior, and our actions. That's all from my side. Now over to Komal ma'am. Wow, what a wonderful explanation given by Bhavna ma'am. So children, you learned that maths do have some very good values if only you are ready to imbibe them. As wisely said by Sri Satya Sai Baba, human values are contained in everyone and these should be preserved. Man cannot become good merely being highly educated. सच ही है, केवल सिद्धांतिक शिक्षा से ही व्यक्ति सुशिक्षित नहीं बनता. उसे आत्मिक ज्ञान व नैतिक मूल्यों की भी आवश्यकता होती है. Let's move on and learn a good value from the topic perimeter. We have learned that perimeter is the distance covered along the boundary, forming a closed figure when you go around the figure once. Perimeter plays a great role when we need to put up a fencing or a wall for the protection of our property. When you build a fence or wall around a place, that place becomes a safe place and no one can intrude inside. In life, this fencing is nothing but peace and calm. When we protect ourselves with the fence of peace and inner calm, nothing can upset us. शांति वह ढाल है जिसमें व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करता है. हमारे आसपास जो भी कुछ होता है, हम उससे प्रभावित नहीं होते. Now let us make it more interesting by adding a story that explains what peace actually is. Once, there was a king. He announced a prize to the artist who would paint the best picture of peace. Many artists sent their pictures to the king. The king looked at all the pictures and liked only 2. So he decided to choose between them. One picture was of a calm lake. The lake was surrounded by peaceful towering mountains all around it. The sky was calm and blue with fluffy white clouds. Everyone found it to be a perfect picture of peace. But the other picture, which had mountains too, but these were rugged and bare. The sky was fuming with anger, with lightning, thunder and rain falling from the sky. Alongside was a noisy and foaming waterfall. This picture, in any sense, was looked peaceful at all. Which picture do you think won the prize? Which picture would you choose if you were the king? The king chose the second picture. Now, do you know why? When the king looked closely, he saw behind the waterfall a tiny bush growing in the crack of the rock. There was a mother bird that had built its nest in the bush. In the midst of the rush of angry water sat the mother bird on its nest in perfect peace. Can you guess why the king chose the second picture, which seemed rugged? Let me explain why.
The king said, "Peace does not mean to be in a place where there is no noise, trouble, or hard work. Peace means to be in the midst of all those things and still be calm in your heart. That is the real meaning of peace. When we have peace in our hearts and minds, we draw peace into our lives." तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत हैं, बिकॉज दैट इज टेम्परेरी। असल में शांति का मतलब है कि हमारे बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह से शांत हैं, क्योंकि जिसका मन शांत है उसे आप कितनी भी सुंदर से सुंदर जगह ले जाओ, वो दुखी ही रहेगा। लेकिन जिसका मन शांत है, उसके बाहर चाहे जितना भी तूफान हो, अंदर से शांत ही रहेगा। और यही शांति का असली मतलब है। And you know, students, why we are teaching you this? As you grow old, you'll understand that life is never 100% perfect. When we surround ourselves with peace and calmness, we are not bothered by the ups and downs of life. चलो आगे बढ़ते हैं to the next topic, decimals. Before that, let me just ask you a question. Children, do you know what unifies the entire universe? What connects each and everything in the world? Yes, that's God. In the same way, decimal point connects an integral part that is complete in itself to a fractional part that is a part of a whole. Decimal point, in fact, is our special tool that connects or unifies numbers of all types and sizes into a single unified entity. Similarly, in our real life, we should treat everyone connected with us, irrespective of their size, strength, talents, to combine into one unified team. We should not ignore anybody because they are small or weak or less talented. Always remember, जो काम एक सुई कर सकती है, वही काम एक तलवार नहीं कर सकती. Decimals also signifies unity between the privileged and the underprivileged. Never forget, dear students, we all are special. God has gifted each one of us with some unique talents. In that case, what our duty is? Our duty is to help others where we can. जैसे कि अगर आप चीजों को अधिक तेजी और स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं, तो उन्हें सीखने में अपने क्लासमेट्स की हेल्प करो. If you believe you have a well-developed vocabulary, why not to help others in enhancing their reading and writing skills? अगर आप मानते हैं कि आपके लिए कठिन, चुनौतीपूर्ण कार्य करना आसान है, तो इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करें. यदि आप आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन रखते हैं, तो कुछ जरूरतमंदों को दान दें. Remember, my dear students, if you are graced with greatest knowledge, teach or share that knowledge with someone who cannot afford to go to school or can't make it to their life. So remember, be a giver, because this is only the essence of life. Now, I'll invite Priyanka Chaudhary ma'am to introduce us to the next topic and the value we can learn from that. Thank you, Komal ma'am. Good morning, one and all. Our next topic is integers and values associated with it. Before knowing the values of integers, we need to know what integers are. Integers are collection of natural numbers, whole numbers, and negative numbers. Natural numbers are counting numbers. They start from 1 and go up to infinity.
By infinity, we mean which has no end. And if we add 0 in natural numbers, then they become whole numbers. Negative numbers are the numbers which are less than 0. They have negative sign with them. Let us see this on a number line. All the numbers on the right side of 0 are called positive numbers, and the numbers less than zeros, that is negative numbers, are on the left side of 0. So, when we combine all these numbers, we get a set of integers. There is no starting and ending number for this collection. That is, we cannot find the smallest and the biggest integers. Now, let us learn the addition of integers. When one positive and one negative integers are added, we subtract them and put the sign of bigger integer. Similarly, in this world, when you make friendship only with good people, your positive values will go up because the good people's good qualities will rub off on you. On the other hand, if we are with negative people all the time, gradually we will find ourselves becoming just like them. Let us understand this with the help of slides. In this slide, you can see two friends. दोनों ही दोस्तों में कुछ ना कुछ नेगेटिव क्वालिटीज हैं. जैसे एक को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, स्वार्थी है, आलसी है, झूठ बोलता है, और दूसरा दोस्त जिद्दी है, दूसरों से ईर्ष्या रखता है. जब ऐसे दो लोग दोस्त बनते हैं तो उनकी बुरी आदतें बढ़ती हैं, मतलब उनके अंदर नेगेटिविटी का इजाफा होता है. इसी तरह जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती है एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ पॉजिटिविटी. Here in this slide, we can see that when a negative person, by negative person I mean having bad qualities, when such a person becomes a friend of a good person, then gradually his negative qualities decrease. This is what happens when we add a positive and a negative integer. The negative value decreases. और इसी तरह जब दो पॉजिटिव लोग मतलब गुड पीपल एक दूसरे के दोस्त बनते हैं तो वह एक दूसरे की अच्छाइयां बढ़ाते हैं. उनके अंदर पॉजिटिविटी, गुड क्वालिटीज इंक्रीज होती हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करने पर एक बड़ी वैल्यू वाला पॉजिटिव नंबर मिलता है. सो चिल्ड्रन, कोशिश करिएगा कि आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को जगह दें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें. Let me explain you this by taking another example. Students, एक प्लेन पेपर की अपनी कोई खुशबू नहीं होती है, पर अगर उसी पेपर को हम समोसा या फ्लावर्स रैप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो उसी की खुशबू ले लेगा. We all are like that plain paper. We acquire good and bad qualities by our association. अगर हम कुछ बुरा काम करेंगे तो हमारा नाम खराब होगा. जैसे कि जब हमने समोसे को पेपर में रैप किया तो पेपर स्मेली बन गया. And you all know that it is almost impossible to remove that smell from the paper. नाम कमाने के लिए सालों लग जाते हैं, पर बिगड़ने में सिर्फ एक पल लगता है. हम समाज में नाम तभी बना सकते हैं अगर हमारी कंपनी मतलब हमारा साथ अच्छा हो और हम अपनी गलतियां ना दोहराने का वचन लें. व्लादिमीर लेनिन, जो कि रशिया के एक महान लीडर हैं, उन्होंने कहा था, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल हु यू आर. इट मीन्स यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप. So children, always remember that we need to be positive and should have a positive mindset so that we can look at everything with a grateful heart and peaceful mind. Wow, Priyanka ma'am, so nicely explained by you. Now let's over to Jyoti. Good morning, one and all. Our next topic is surface area and volume of cylinder. Surface area of any 3D figure is the outside part or the uppermost layer of it.
while the volume is the capacity. Now, let us learn about the values associated with them. Our body represents surface area and inner soul or Atma represents volume. The body plays a crucial role in keeping the soul safe and pure. So, it is our duty to keep our body and health in a good condition. Like body and soul, volume and surface area are inseparable, as the two sides of the same coin. We can also say that volume is the inner capability or capacity of a person. हम जब भी किसी से दोस्ती करें तो उसके विचारों व काबिलियत को देखकर करें, ना कि बाहरी खूबसूरती, क्योंकि बाहरी खूबसूरती अक्सर धोखा दे जाती है। जो इंसान अंदर से खूबसूरत है वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगा। अक्सर देखा जाता है कि हम किसी भी व्यक्ति से उसके रूप के आधार पर वार्तालाप करते हैं, परंतु हमें रूप से ज़्यादा गुणों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान ने सब में कुछ ना कुछ गुण दिए हैं। So students, all we need to do is identify that talent in ourselves and start working on it. Amazing, Jyoti ma'am. I'm surprised that so many values are hidden in mathematics. Now, I would like to invite Jitendra sir for some more values. Greetings of the day to one and all. Now let's move on to another topic which is known as miracle of nature. हम हमेशा ही नेचर को एंजॉय करते हैं और कभी हमने नेचर को इतने करीब से देखा हो तो हम ये देखेंगे कि नेचर हैज़ क्रिएटेड one particular pattern in every plant and flower, and that particular pattern is known as Fibonacci sequence. Now, what is Fibonacci sequence? It is a series of numbers that follow a unique integer sequence. The pattern can be seen in everything from human body to physiology of plants and animals. Now, to know more about the Fibonacci numbers, let me throw some light on Fibonacci spiral. And that spiral is created by drawing circular arcs connecting the opposite corners of squares in Fibonacci rectangles. Within these rectangles, we can create a spiral with cross sections equal to exactly 1.618, the golden ratio. Can you see the beauty of the nature in seashell? The spiral found in it corresponds to the spiral found in Fibonacci sequence. The same spiral can be seen in the beautiful and famous portrait of Mona Lisa. See, another miracle of nature, the Fibonacci sequence in our hands and in ears. Some more example of Fibonacci sequence in nature. It's amazing. Fibonacci sequence in petal pattern. It can be seen in most petal pattern. For example, most daisies have 34, 55 or 89 petals, and most common have 5, 8 or 13 petals. प्रकृति की प्रशंसा करना, आनंद लेना तथा आभार प्रकट करना हमारा मानवीय मूल्य है। मानव जाति के अलावा इस सच्चाई को कोई और महसूस नहीं कर सकता है। नेचर में कई तरह के विभिन्न पैटर्न मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि ब्रह्मांड में कोई शक्तिशाली, सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान शक्ति है जिसे हम भगवान कहते हैं। दैट्स वी कॉल गॉड। गणित भी एक प्रकार से विभिन्न पैटर्न को अध्ययन करने की प्रक्रिया है और अगर कोई ध्यान दे तो प्रकृति में कई प्रकार के मैथमेटिक्स पैटर्न मौजूद हैं। क्या करिश्मा है कुदरत का, नेचर में भी मैथ्स, मैथ्स में भी नेचर। वाओ, अमेजिंग। Thank you Jitendra sir and Mudita ma'am
for explaining beautiful Fibonacci concept in nature. Now, I would like to invite Monica Mehta ma'am for the next interesting concept of mathematics in values. Now come to the another topic, Cartesian plane. As we all are very well aware that to plot any point or line, we need this. In this we have x-axis, y-axis and origin. If the distance of the points from these axes is equal, then the line passing through these points passes through the origin. Likewise, among two axes, if we refer x-axis as happiness, means happy and cheerful moments in our life, and y-axis as sufferings or sorrows of our life. Now we are going to refer origin as God or our Almighty. Then we can say that the human who keep themselves balanced in both situations, means happiness and sufferings, reach to the Almighty. Life is all about art of balancing. So precisely we can say that these kind of people learn to accept the things, situation and others' viewpoint. Now another topic, plotting of points. Whether abscissa or ordinate of a point is positive or negative, we can always draw that point. Point can be drawn in any direction. This law applies in our life also. We may have many ups and downs. Every situation or every circumstance teaches us something. It means the life may flow in any direction. We have a new road, new beginning waiting for us in every direction. Look around yourself and happiness is trying to catch you in every direction. What an amazing explanation by Monica Mehta ma'am. Now let's over to Monica Makkar ma'am for another beautiful concept, that is polynomials. Let us move to polynomials now. Polynomials, a big concept in algebra. In polynomials, we all are familiar with the degree of the polynomial. It tells us about the behavior of the function. Number of zeros in a polynomial are equal to the degree of the polynomial. That means degree 1 means 1 zero or 1 solution. Degree 2 means 2 zeros or 2 solutions. Same way, degree 3 means 3 zeros or 3 solutions. Now, question is, what is so special about it? Let us take a closer look with this common theme. If a person is obedient and not egoistic, that is a linear polynomial, he will opt for a single zero. When the degree of ego will be raised, confusion will also be elevated, right? As it is the ego that confuses a person in making the right and most appropriate decisions. To better understand the meaning of this concept, let me tell you a story of a Raja and a व्यापारी. बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक व्यापारी आता है जो किसी दूसरे राज्य का था. उसके हाथ में एक शानदार पगड़ी थी जिसमें कुछ ऐसी चीजें लगी हुई थी जो बहुत ही ज्यादा चमकीली थी. अब वो व्यापारी राजमहल में आता है और राजमहल में आके पहरेदारों से कहता है कि मुझे महाराज से मिलना है. मैं कुछ ऐसी चीजें लाया हूँ जो मैं राजा को दिखाना चाहता हूँ. पहरेदार उसके हाथ में जब पगड़ी देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई अनोखी चीज है और हो सकता है कि राजा इसे खरीदना चाहें, तो वो उसे अंदर आने देते हैं.
अब वो व्यापारी राजमहल में जहां राजदरबार लगा हुआ था पहुंच जाता है। राजा के सामने पहुंचता है और राजा को कहता है कि ये एक पगड़ी है और इस पगड़ी की जो कीमत है वो है 1000 स्वर्ण मुद्राएं, यानी कि 1000 सोने की मुद्राएं या अशर्फियां देके आप इसे खरीद सकते हैं। तो राजा उस पगड़ी को देखकर सोच रहे होते हैं कि इस पगड़ी में आखिर ऐसी क्या खासियत है। इतने में राजा का मंत्री राजा के पास आता है और राजा के कान में कहता है कि महाराज, मुझे तो ये पगड़ी कुछ खास नहीं लग रही। ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पे इसकी कीमत 1 स्वर्ण मुद्रा ही हो सकती है। आप इसके बहकावे में ना ही आए। अब वो जो व्यापारी होता है वो मंत्री को राजा से बात करता देखकर समझ जाता है कि हो ना हो मंत्री ने राजा को कुछ ना कुछ तो पगड़ी के बारे में कहा है। शायद कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद राजा ये पगड़ी ना खरीदे। तो वो राजा से कहता है कि महाराज, मुझे लगता है कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही राजा है जो इस पगड़ी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद सकता है। वो ही इसके महत्व को समझ सकता है और मुझे क्या लगता है ये राजमहल इसकी सही जगह नहीं है और आप वो राजा भी नहीं हैं। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। अब राजा ये सुनते ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं और वो अपने मंत्री से कहते हैं कि जाओ, इसे 1000 नहीं बल्कि 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो और ये पगड़ी व्यापारी से खरीद लो। अब व्यापारी पगड़ी मंत्री को दे देता है और मंत्री के साथ वो 2000 स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए चला जाता है। मंत्री रास्ते में उससे पूछता है कि अब तो तुम पगड़ी बेच ही चुके हो, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन एक प्रश्न है कि मैं तो राजा को बता चुका था कि इस पगड़ी की कीमत ज्यादा से ज्यादा 1 स्वर्ण मुद्रा ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर समझ नहीं आया कि आखिर राजा तुम्हारी पगड़ी खरीदने को तैयार कैसे हो गए। तो वो व्यापारी कहता है, बहुत सरल सी बात है, राजा को जो तुमने बताया वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन राजा की कमजोरी क्या है या फिर राजा का ईगो कितना बड़ा है उसकी खबर मुझे पहले से ही थी और उस ईगो को यूज कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता था और मैंने उसी का ही यूज किया, बस। तो आपने देखा कितनी चालाकी से व्यापारी ने राजा को कंफ्यूज करने के लिए उसकी ईगो को यूज किया और राजा से वो सब करवा लिया जिससे उसे फायदा होना था। So dear friends, central idea of the story is confusion results because the ego cannot understand what is happening. An egoistic person will not get satisfied with 1 0. He will try for another 0 too, and hence will be confused. Even there are chances of a single solution with more than 1 degree sometimes. So, higher the ego, more the confusion. Therefore, if a person is not egoistic, he will opt for a single solution or decision and will not be confused. Polynomials भी हमें जीवन की इसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। When we draw polynomials on graph paper, we have seen that degree 1, that is a linear polynomial, has a straight line graph.
Degree 2, that is a quadratic polynomial, has a bend in the graph and hence not a straight line graph. Degree 3, that is a cubic polynomial, has more bends in the graph and so on. The thing to notice is that as the degree or ego increases, the bends in the graph also keep on increasing every time. That means instability or confusion increases with increase in one's ego. Reality of the life is that not every situation is so straightforward. Life is not meant to be easy. It is meant to be lived. It is full of hardships and a never-ending walk across the different soils. Let me give you a situation. Imagine if you are given a power of either saving yourself or your spouse. Whom will you save? Yes? Whom will you save? Choice will be a no-brainer, right? Few days back, I was introduced with another story by director sir. I was amazed with the way he framed the story related to polynomials within no time. To my surprise, the theme of the story refers to the underlying message from the polynomials too. The story goes like this. A couple went for a cruise tour while leaving their children at home. Unfortunately, the cruise ship was sinking due to catastrophic weather condition. The couple finally made their way to the lifeboat area. But there was only space for one person left. The man jumped into the lifeboat, leaving his wife on the sinking ship. Can you guess what she shouted to her husband? Any guesses? I know your answer. That the man was selfish, he left his wife sinking, the man pushed his wife to save himself from sinking cruise ship. Those who haven't heard this story before must be having a vague notion, right? Let us see what actually happened. The cruise sunk and the man returned home and brought up their children single-handedly. Many years later, after the death of the man, their daughter, who had been accusing her father, found her father's diary. And she found out the truth. She found that when her parents went onto the cruise ship, the mother was already diagnosed with an incurable disease. During this crucial moment on the sinking ship, her father rushed to the only space left on the lifeboat. He wrote in his diary, "I wanted to sink with my wife together on the sinking cruise. But for our children, I could only let you sink alone into the deep cold ocean bed." She shouted, "Please, please take care of our children." Good and evil are complicated and can be hard to understand. This is why we should not only focus on the surface and judge others without understanding them first. That means life is not always a linear polynomial having one zero. It may have several other aspects too. We must not judge others without understanding them first. Those who apologize first after a fight do so not because they are wrong, but because they value the people around them. So, do not judge a book by its cover. Thank you so much. Have a nice day. Thank you, teachers. That's really amazing. Through this unique session, we have tried to explain that maths has a capacity to inculcate not only utilitarian value, but it also germinates and nourishes in an individual good
and strong character. मैथमेटिक्स ना केवल दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करता है, बल्कि यह एक अच्छे और मजबूत चरित्र की भी नींव रखता है. It develops the qualities like honesty, contentment, patience, right and conduct, craft to show and feed the soul, to accept and respect differences, and the list goes on and on. तो आज नेशनल मैथमेटिक्स डे के इस अवसर पर हम चाहते हैं कि आप एक प्रतिज्ञा लें. Yes, we want you to take a pledge that you'll try to do your best in your work and behavior and will try to imbibe these values in your life. Now, I would like to invite our respected director, sir, to share his views. Good morning, dear parents, dear teachers, dear children. We have already taken too much of time, and I hope that you must be enjoying this whole effort of our teachers. Basically, we are lucky that we have got such a brilliant mathematics teachers, and this is our routine that while teaching, the teachers are asked. Dear parents, हमारे यहाँ सभी टीचर्स पढ़ाते हुए लेसन से कनेक्टेड वैल्यू प्रिपेयर कर कर वो क्लास में जाते हैं, क्योंकि अगर आप सीधा वैल्यू देना चाहें पेरेंट बच्चों को तो यू विल फाइंड कि वो इसको ग्रास्प नहीं करते, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते. रादर वो उस टीचर को कोई ऐसा नाम दे देते हैं, ये टीचर ऑर्थोडॉक्स है, या आज का फैशन है कि वैल्यू को सीधा देने पर वो एक्सेप्ट नहीं करते. मैं भी कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूं, कुछ वैल्यूज जो अपने टेन्योर के टाइम पर मैं अपनी क्लासेस में यूजली यूज करता था. और ये टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स पे बात हुई है, मैं इन टॉपिक्स पर तो नहीं, लेकिन इनसे अलग हटकर देना चाहूंगा आपसे. हम कहते थे एनीथिंग रेज की पावर 0 इज 1, कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर वो ईगो 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है एंड गॉड इज 1. दैट मीन्स, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर से ईगो को मिटा दे तो वो उसकी जो क्वालिटीज हैं वो भगवान की क्वालिटी से मिलती जुलती हो जाती हैं. हम भगवान के एक अंश हैं तो उसकी क्वालिटी भगवान की क्वालिटी से मिलते जुलते हो जाती हैं. ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट को लेकर जब हम बात करते हैं, जितना हमारे टाइम की रेगुलरिटी हमारी लाइफ में होगी उतनी ही ज्यादा हमारी आउटपुट होगी. अब आप एक रस्सी ले लें या एक थ्रेड ले लें, उस थ्रेड से अगर एक ग्राफ पेपर में आप एक सर्कल के ऊपर उतना ही, जितनी थ्रेड की लेंथ है उतना बड़ा एक सर्कल बनाएं. सर्कल को जितना एरिया आप कवर करेंगे, आप देखेंगे कि अगर सर्कल है तो वो एरिया मैक्सिमम होगा. आप उसी रस्सी को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर कर उससे एक डेकागन बनाएं, एक ऑक्टागन बनाएं, एक हेक्सागन बनाएं, या एक पेंटागन बनाएं, या एक स्क्वायर बनाएं, या एक ट्रायंगल बनाएं. आप देखेंगे ज्यों-ज्यों आप ऑक्टागन से ट्रायंगल तक जाएंगे, जो एरिया कवर हो रहा है वो कम होता चला जाएगा. मतलब ये कि अगर अपने जीवन में आप पूरी तरह से रेगुलर रहेंगे तो आप बहुत आउटपुट दे सकते हैं, आपका एरिया बड़ा होगा. लेकिन अगर आपकी रेगुलरिटी सफर करेगी तो जितना आप छोटे सेगमेंट से बड़े सेगमेंट की तरफ जाएंगे, आपकी इनपुट, आपका एरिया कम होता जाएगा. यानी हमें चाहिए ये कि हम अपने एक एक मिनट को
सोच समझकर इस्तेमाल करें। हमारी दैनिक जीवन में जितनी रेगुलरिटी रहेगी, रेगुलर फिगर इज सर्कल, और उसके बाद आप सर्कल से नीचे कई तरह की फिगर्स देख लें, आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा एरिया उस थ्रेड से, उस सर्कल से बनता है। अगर मैं उस थ्रेड से कोई भी और फिगर बनाऊंगा तो वो एरिया कम रह जाएगा। और एक और फैक्ट भी, अगर मैं ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, यानी मैंने उस थ्रेड से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई तो जो एरिया होगा वो उन सब ट्रायंगल से बड़ा होगा जो मैं उस थ्रेड को लेकर बना सकता हूं। बताने का मतलब ये था कि जब मैं अपने जीवन में एक रेगुलरिटी लेके आता हूं, एक ठहराव होता है मेरे जीवन में, तो मैं ज्यादा काम कर सकता हूं। 24 घंटे सबके पास हैं, पर अगर आप 24 घंटे का हिसाब अपने मन में बना लें, उसको रेगुलर कर दें कि आपने हर सेकंड को कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप दूसरों के मुकाबले में ज्यादा काम कर पाएंगे। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए हम अपने जो आपसे वायदा है कि हम 1 घंटे से ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहते, तो समय इजाजत नहीं दे रहा। पर आपका अगर कोई भी प्रश्न हो तो हमारा एक जो जीमेल एड्रेस है उस पर आप वो डालें। मान लीजिए आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं कि इस टॉपिक में मैं कैसे वैल्यू दे सकता हूं, तो उसके लिए आप हमें पूछ भी सकते हैं, और हम आपको एक ऐसी पोर्टल भी शेयर कर सकते हैं जिसमें हर लेसन से कंसर्निंग, मैं ये टीचर कम्युनिटी के लिए कह रहा हूं, जिसमें हर लेसन से कंसर्निंग कैसे बच्चों को वैल्यू देनी है। क्योंकि हमारा जॉब ये है कि हम बच्चों को गुड भी बनाएं और ग्रेट भी बनाएं, और वो जॉब हमारा तब पूरा होगा जब हम अपने लेसन को वैल्यूएबल लेसन बना देंगे, वैल्यू से भरा हुआ लेसन। थैंक यू वेरी मच डियर पेरेंट्स, डियर टीचर्स, आई एम वेरी हैप्पी with your performance, and dear children, let us have a pledge. We'll be good as well as great. Thank you very much. Anubhav will share the Gmail address. Thank you. Thank you, Director Sir. Principal Ma'am, DC Model School. Principal, Montessori School. Deepika Ma'am, Latika Ma'am, all teachers, parents and students. Thank you all for sparing your time to value the values mathematics teaches us. Thank you all. You can always share your feedbacks at the given website ehvdcms@gmail.com. We'll wait for your feedbacks. Thank you.